ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज में आप सभी का स्वागत है बच्चों। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये इंग्लिश लीगल डिक्टेशन क्लास है और ये सभी जो है कोर्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट डिक्टेशन है इंग्लिश की। ये जैसे मतलब सेशन कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट, सॉरी सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक ही बात है, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो सब के लिए ये डिक्टेशन इम्पॉर्टेंट है। तो इस डिक्टेशन को पहले मेरे साथ शॉर्ट हैंड में आप लिखिए, मैं इंग्लिश पढ़ूँगा, आप शॉर्ट हैंड में लिखिए। और उसके बाद जो है हमारी वेबसाइट है, ये जो नाम है ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज, ये जो सेंटर का नाम है, इसके आगे .com लगा दो तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पर जा करके एक लाल कलर का बटन है, एडमिशन फॉर गवर्नमेंट जॉब ओनली, इस बटन पर क्लिक करोगे, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, यूज़र नेम पासवर्ड खुद से बनाइए। टाइपिंग के स्टेनो के कोर्स के अंदर आप मंथली इसको ले सकते हैं, ईयरली ले सकते हैं और वहाँ पर जा करके इनको डिक्टेशनों को टाइप कर सकते हैं। इससे अलग SSC से रिलेटेड या और एग्ज़ाम से रिलेटेड वहाँ पर कैलाश चंद्रा की डिक्टेशन अवेलेबल हैं, इम्पोर्टेंट डिक्टेशन। ये फैन बंद करना, इम्पोर्टेंट डिक्टेशंस जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो जो जिस भी चीज़ की जैसे मतलब आपको डिक्टेशन लिखनी है वो एक ही फीस के अंदर अवेलेबल है। हाँ, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ इंग्लिश लीगल डिक्टेशन नंबर 9। डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। The question for consideration is as to whether it is permissible for an employer to fill any subsequent vacancy caused over and above the number of vacancies advertised, and in case the number of vacancies advertised and in case the number of vacancies advertised stand filled, whether then selection process comes to an end and stands exhausted. In such an eventuality, there remains no sanctity to the wait list as to whether it is permissible for the employer to fill up the future vacancies which came into existence subsequent to the conclusion of the selection process from the wait list so prepared. It is a settled legal preposition that authority cannot fill up vacancies over and above the number of vacancies advertised, as it would amount to filling up the vacancies which have occurred in future, and that would be violative of the fundamental rights of the candidates who become eligible subsequent to the advertisement, as held by the Honorable Supreme Court in Union of India and others versus Ishwar Chandra. The Honorable Supreme Court quashed the appointments made over and above the vacancies advertised, holding that such an action was neither permissible nor desirable for the reason that it would amount to improper exercise of power, and only in a rare and exceptional circumstance and in emergent situation this rule can be divided from, and it can be done only after adopting policy decision based on some rationale at the authority cannot fill up more posts than advertised as a matter of course. The court further held that selected candidates have right to appointment only against vacancies notified, and that too during the life of the select list, as the panel of selected candidate cannot be valid for an indefinite period. Moreover, impaneled candidates in any event cannot have a right against future vacancies. It has been further held that a person does not, on account of being impaneled alone, acquire any indefeasible right of appointment. Impanelment is at the best
a condition of eligibility for the purposes of appointment and by itself does not amount to selection, and nor does it create a vested right to be appointed, and by itself does not amount selection, and nor does it create a vested right to be appointed unless the relevant service rules provide to the contrary. In the said case, as the selection process was completed in 5 years after the publication of the advertisement, a contention was raised that the impaneled candidates deserved to be appointed over and above the vacancies notified. The Honorable Supreme Court rejected the contention, observing that it may not be justified as offering the posts in such a manner would adversely prejudice the cause of those candidates who achieved eligibility in the meantime. In view of the above, the law can be summarized that appointments cannot be made over and above the number of vacancies advertised, as it would adversely affect and violate the fundamental rights of those who became eligible subsequent to the date of advertisement, in pursuance of which the select list is prepared. ये जो डिक्टेशन थी, इसकी स्पीड जो है 102 या 103 के आसपास रही होगी। इसको पहले अच्छे से पढ़िए, इसको वेबसाइट के ऊपर लगा दिया गया है, पहले अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद उस पर टाइप कीजिए। आपके जो एरर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 से ऊपर नहीं आने चाहिए। अगर 10 से ऊपर नहीं आते हैं तो आपकी जो शॉर्ट हैंड दी बेस्ट है और आप जो है पेपर दे सकते हो और आपका सिलेक्शन हो सकता है। इस क्लास के अंदर इतना ही बच्चों। नमस्कार बच्चों।